Dear students, welcome back to Banner Online Classes, and today we will make an important program, that is to check whether a number is prime or not. So what we will do today, we will input one number and we will check whether that particular number is prime or not. So first of all, before making the program, you have to understand the concept of prime number. If you don't know the concept of prime number, so you cannot make the program. So basically, what is prime number? A number which is divided by either one or itself is known as the prime number. Okay, now if I take 5, so 5 is only divisible by 1 and 5, so it is a prime number. If I take 9, 9 is divided by 1, 3 and 9, so it is not a prime number because it is dividing by 3. So हम वही numbers prime number consider करेंगे जो या तो 1 से डिवाइड हो और या तो 9 से डिवाइड हो, और जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है तो वो कौन सा होता है हमारा, that is 2. Okay, so this concept I hope you all have already know, but before starting I just want to tell you the concept. Okay, so now what we will do, we will input one number, we will take one variable n equals to int input, enter any number, enter any number. Now what I will do, I will check whether that number is prime or not. For that I will apply the for loop. I will write for I in range, and I will take the range from 2 to n. ओके, क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, if n mod I is double equals to 0, so what this line is telling us, this line is saying that n mod I, let us suppose I have input the variable 5. 5 will be divided by 2, then 3, then 4. Okay, so if 5 is divided by 2, 3 and 4, अगर किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाती है either 2, either 3 and 4, so it will not a prime number, otherwise it will be a prime number. Okay, so यहाँ पर ये concept apply हो रहा है. Now what I will do, I will print here not prime number, because if in any case number is divisible, then it's quite obvious it is not a prime number, because what are the prime numbers which are only divisible by 1 or by itself. So here I will write not prime number, and in the else part here I will write else I will print prime number. Okay, now it's look like a very simple program, but when I run that program, you can see that it will not give me the correct output here. When I enter 5, so here it is giving me prime number 3 times. Okay, so this is the problem. I want only one time that number prime है या नहीं है. So एक problem तो इसमें ये है. Now when I run it second time, then what will happen? Let us suppose I will give 9. So here you can see that it is printing prime number, not prime number, prime, 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 prime. So although ये जो output है बड़ा messed up है और clear नहीं है. Now why it is happening? Because let us suppose I have entered 5 here. So now this loop will run for 2, 3 and 4. Now first of all it will check n mod I, means it will check 5 mod 2. Okay, 5 mod 2, the result will not 0 because the condition is false here.
then it will execute the else part, and the else part it will print prime number. Now this loop will run again. Okay, it will run for 3. Now what will happen here? Here it will be 5 mod 3. Again this condition is false, it will run the else part and it will print the prime number. Now again it will run for 4. Now again this condition will be false and it will print the prime number. So it will print prime number 3 times. Now if my number is, let us suppose 4, so now it will run for 2 and 3. And what will happen here? In first, when I run that code, so it will be look like that. It will run for 2, and here if 4 mod 2, the condition is 2 because 4 is divisible by 2, it will execute that part, and here it will print not prime. Then again this loop will run because it have to run for 3 also. So here what it will do, it will run for 3 and on that time it will print prime number. So it is running 2 times, and in first case it is giving me the not prime, and in the second time it is giving me the prime number. We can see here also, when I give 4 it will print not prime first, then it will print prime first. So now what I will do to correct my code, and first of all I will write break here. So break से होगा क्या कि now when I enter let us suppose 4, so here you can see that it is printing me the not prime. Okay, now और अगर मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और बड़ा नंबर अज्यूम करूँ, लेट अस सपोज 9 ले लेता हूँ, तो हियर होगा क्या कि इसने नॉट प्राइम तो प्रिंट किया बट यहाँ पर प्राइम भी प्रिंट किया. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही मैंने यहाँ पर 9 को एंटर कराया, तो नाउ इट विल रन फॉर 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. इतनी वैल्यू के लिए रन होना है 9 को. और here when I write is, पहले जब मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो ये डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा, मॉड 0 नहीं आएगा, तो वो क्या करेगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा और प्राइम नंबर को प्रिंट करेगा. एट सेकंड केस में जब 3 से डिवाइड करूंगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और नॉट प्राइम प्रिंट करेगा. ओके, तो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग. तो अभी भी जो प्रोग्राम है वो मेरा करेक्ट नहीं है. सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली टेक वन वेरिएबल. I will take f equals to 0. Now what I will do, I will not print this here. What I will do, I will simply write f equals to 1, and here I will not execute that else part also. And now when I come out to the loop and simply if I write if f double equals to 0, then here I will print prime number, and in the else part here I will write not prime. Okay, now actually what is happening here, जैसे ही कोई भी नंबर अगर डिविजिबल होता है, अगर किसी भी तरह का डिविजन पॉसिबल होता है, तो सिंपली मैं f की वैल्यू को 1 कर रहा हूँ. तो यहाँ पर सिंपली 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो f की वैल्यू 0 होगी या तो f की वैल्यू 1 होगी. अगर ये इफ कंडीशन एक बार चल गई, एक बार भी एग्जीक्यूट हो गई, तो क्या होगा, f की वैल्यू 1 हो जाएगी, अदरवाइज f की वैल्यू 0 ही रहेगी. अगर f की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब क्या है कि n mod i डबल इक्वल्स टू 0 कंडीशन ट्रू है. अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, इसका मतलब क्या है कि नंबर प्राइम नहीं है. सो हेयर इसीलिए मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर एक वेरिएबल का यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पर अगर f की वैल्यू 0 ही रहती है तो वो नॉट प्राइम नंबर होगा, और अदरवाइज वो क्या होगा, नॉट प्राइम होगा. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर f की वैल्यू मेरी 1 है तो वो क्या हो जाएगा, आपका नॉट प्राइम हो जाएगा, और यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, अदरवाइज प्राइम हो जाएगा. आप इसको कैसे भी लिख सकते हो. नाउ दिस इज द कंप्लीट प्रोग्राम, एंड व्हेन आई रन दैट प्रोग्राम, एंड हेयर आई विल राइट, कोई भी नंबर आप ले सकते हो, मैंने 47 ले लिया. तो हेयर यू कैन सी दैट वो एक ही बार प्रिंट कर रहा है, वो भी है प्राइम. और अगर मैं यहाँ पर एक बार और रन करता हूँ और यहाँ पर एक नंबर और लेता हूँ, लेट अस सपोज 2,
5 6 2. So here you can see that वो एक ही बार प्रिंट कर रहा है, not prime. Okay, so now this program is completed. So this is how we will make the program of prime number. Now we can make this program in another way also. Here instead of using this f variable, मैं यहाँ पर for else का यूज भी कर सकता हूँ. So मैं इन सबको यहाँ पर एलिमिनेट करता हूँ एंड यहाँ पर क्या करते हैं, हम सिंपली प्रिंट कर लेते हैं प्रिंट नॉट प्राइम. और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो else स्टेटमेंट है वो if के साथ ना लगा के else के साथ लगाते हैं. ठीक है, और यहाँ पर प्रिंट करते हैं हम प्राइम नंबर. And when I run that code, and again when I take the value, let us suppose I will take value 2565. Here you can see that it is showing me not prime number, and when I run it for prime number, and let us suppose I will write 147, so it will print not prime. Okay, so now my program is correct. Now how this program is working, for that you have to understand the concept of for else loop. तो for else वाला पार्ट कब एग्जीक्यूट होता है, वो तभी एग्जीक्यूट होता है जब फॉर अपना नॉर्मल एग्जीक्यूशन कंप्लीट करे. ठीक है, अगर आप ब्रेक करते हो तो ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता. ठीक, तो यहाँ पर होगा क्या, नॉर्मल एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है, अगर मैंने यहाँ पर 9 लिया हुआ है नंबर, और अगर 9 को मैं इन सब से डिवाइड कर दूं, इन सब से डिवाइड अगर कर दूं और डिवीजन ना जाए, क्योंकि अगर डिवीजन चले गया तो ब्रेक मिल जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा. ठीक है, और अगर मैंने डिवाइड किया और इन सारे नंबर से अगर नंबर डिवीजन ना हो तो वो एल्स पार्ट में आएगा और क्या प्रिंट करेगा, प्राइम करेगा. अगर कहीं भी डिविजिबल हो गया इन नंबर से, सो क्या होगा, वो क्या करेगा, यहाँ पर नॉट प्राइम प्रिंट करके ब्रेक हो जाएगा और लूप से बाहर आ जाएगा. ठीक, तो दिस इज द सेकंड मेथड. नाउ वन थिंग मोर आई कैन डू, कि यहाँ पर मुझे n तक लूप को ले जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है. मैं सिंपली लूप को n/2 + 1 तक भी लेके जा सकता हूँ. ठीक है, इससे क्या होगा कि मेरे नंबर ऑफ इटरेशन कम हो जाएंगे. क्योंकि अगर लेट अस सपोज अगर मुझे 9 चेक करना है, अगर ये 9 4 से डिविजिबल नहीं होगा, सो ये 5 6 7 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा. ओके, सो दिस इज द अनदर कॉन्सेप्ट. ऑल्दो दिस इज नॉट मैंडेटरी, बट फॉर अ गुड प्रैक्टिस आप नंबर ऑफ इटरेशन कम कर सकते हो, क्योंकि 4 2 8 होता है, उसके बाद आप 5 6 7 8 चाहे आप ट्राई कर लो, बट वो डिविजिबल जो है वो वैसे भी नहीं आने वाला. ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइम नंबर. आई होप दिस प्रोग्राम इज क्लियर टू यू, and but you still have any doubt, you can ask in the comment box. So dear student, thank you and keep learning.